Hello students, today I am going to teach you English FL subject and Unit 5 Exploring Values। यानी क्या है, मूल्यों की खोज है। यहाँ बताइए, इक़दार की तलाश चैप्टर का नाम है। यहाँ पर है एक्टिविटी 2 है। नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज आंसर एंड राइट इट्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। Number 1, what solution had Swaminathan to find out? स्वामीनाथन ने कौन सा सॉल्यूशन निकाला था, फाइंड आउट ढूंढा था। ए, हाउ मेनी मैंगोज वेर देयर विथ राम, हाउ मच मनी वुड कृष्णा हैव टू पे, सी, हाउ मेनी आनाज डिड राम वांट टू अर्न, एंड डी है, फॉर वॉट अमाउंट डिड राम विश टू सेल फॉर मैंगोज। राइट आंसर इज बी, हाउ मच मनी, कितने जो मनी थी, कितने पैसे थे, वुड कृष्णा के पास, हैव टू पे करने के लिए उनके पास, कृष्णा के पास कितने पैसे थे। राइट आंसर इज हाउ मच मनी वुड कृष्णा हैव टू पे। इट्स रिलेवेंट नंबर लेटर इज, इसका लेटर है बी, तो यहाँ लिखेंगे बी। 2 नंबर है, फादर वॉज रीडिंग व्हेन ही आस्क्ड क्वेश्चन टू स्वामीनाथन। 2 नंबर है, फादर वॉज रीडिंग व्हेन ही आस्क्ड क्वेश्चन टू स्वामीनाथन। फादर क्या रीड कर रहे थे जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा स्वामीनाथन को। ए है अ मैगजीन, बी एन एरिथमेटिक बुक पढ़ रहे थे, सी है अ न्यूज़पेपर, एंड डी अ स्टोरी बुक। ए है अ मैगजीन, बी है एन एरिथमेटिक बुक, एंड अ न्यूज़पेपर, डी अ स्टोरी बुक। Right answer is a newspaper. The father was reading a newspaper when he asked a question to Swaminathan. The number letter जो है वो है C. So we write here C. 3 number है, what contained the key to the whole problem according to Swaminathan. 3 number, what contained the key to the whole problem according to Swaminathan? A, that whether the mangoes were ripe or unripe, B, that the price decided was reasonable or not, C, that Krishna would buy unripe mangoes or not, D, that Ram would sell away all the 10 mangoes or not. Right answer is A, that whether the mangoes were ripe or unripe. Its letter is A, so we write here A. Number 4, according to Swaminathan, 15 annas for ripe mangoes would be. According to Swaminathan ने क्या 15 annas दी है राइप मैंगोज के लिए। ए है राइट क्या थी, वो फेयर प्राइस थी, बी अनफेयर प्राइस थी, टू लो प्राइस, डी टू हाई प्राइस। राइट आंसर इज फेयर प्राइस, जो फिक्स उसकी प्राइस जो थी। अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन, 50 आनाज फॉर राइप मैंगोज वुड बी फेयर प्राइस। इट्स लेटर इज ए, सो वी राइट हियर ए। नंबर 5, व्हाट मिरेकल डिड स्वामीनाथन वेट फॉर। कौन सा चमत्कार की ओर राह देख रहे थे, वो क्या है, व्हाट मिरेकल डिड स्वामीनाथन वेट फॉर। ए, दैट हिज फादर वुड हेल्प हिम solve the problem.
B. That he would solve it out within a few moments. C. That nobody else would be able to solve it. D. That his father would relieve him from finding its solution. तो व्हाट मिरेकल, क्या चमत्कार डी स्वामीनाथन वेट फॉर, तो लिखेंगे राइट आंसर ए, दैट हिज फादर वुड हेल्प हिम सोल्व द प्रॉब्लम. इट्स लेटर इज ए, सभी राइट हियर ए. नंबर 6. फादर सीम्ड टू बी डिलाइटेड इन डैश स्वामीनाथन. फादर कुछ प्रसन्न हो गए, क्या है? फादर सीम्ड टू बी डिलाइटेड. फादर सीम्ड टू बी डिलाइटेड, प्रसन्न लग रहे थे. इन डैश स्वामीनाथन. ए. ओबेइंग. बी. टीचिंग. सी. प्रोवोकिंग and D. torturing. Father seemed to be delighted in torturing Swaminathan. Its letter is D, so we write here D. 7 नंबर है. नंबर 7. Swaminathan's father warned him. A. To insult him. B. To thrash him. C. To ignore him. D. Not to consider him. Swaminathan's father warned him to thrash him. तो यहाँ लिखेंगे, इसका जो B है, लेटर है B है, वो यहाँ लिखेंगे B. स्वामीनाथन के जो पापा थे, फादर थे, वॉर्न करना चाहते थे उनको पीटने से कि तुम पीटे जाओगे और पीटना मत. तो किसके लिए? तो टू इंसल्ट हिम. बी. टू थ्रैश हिम एंड डी. सी. टू इग्नोर हिम एंड डी. नॉट टू कंसीडर हिम. राइट आंसर इज टू थ्रैश हिम. इट्स लेटर इज बी, सो वी राइट हियर बी. 8 नंबर. द लोंगर स्वामीनाथन हेजिटेटेड. जो लोंगर जो स्वामीनाथन क्यों झिझक रहे थे? ए. द लेस वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग. बी. द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग. सी. द मोर लिबरल हिज फादर बिकेम. D. The faster his father started asking him questions. A है the less violent. The twist was becoming. इसका क्या है? The more violent. इतना ही क्या वो हिंसक होता जा रहा था. The more liberal. क्या है? Liberal. His father became. D. The faster his father started asking him questions. Right answer is the more violent. जो था हिंसक, जो जितना हिंसक होता जा रहा था, तो ये लिखेंगे हम B. The more violent the twist was becoming. So letter is B, so we write here B. Number 9. As Swaminathan could not solve the problem soon. उन्होंने क्या है, जो प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया, जल्दी सोल्व नहीं कर पाए. हिज फादर ग्रीव. क्या हुआ? गुस्सा हो गए. क्या हुआ उनके फादर? ए. एंग्री. बी. पोलाइट. सी. टैक्टफुल एंड डी. पसेसिव. तो राइट आंसर इज एंग्री. एज स्वामीनाथन कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम सून, हिज फादर ग्रीव एंग्री. इट्स लेटर इज ए, सो वी राइट हियर ए. Number 10. What was the correct answer to the question asked by Swaminathan's father? A. 6 annas. B. 3/2 annas. C.
4 annas, and D 15 annas. What was the correct answer to the question asked by Swaminathan's father? 6 annas. Its letter is A, so we write here A. Now question 2A. Read the following text carefully and answer the questions given below them. नंबर 1 टेक्स्ट जो दिया है यहाँ इसको रीड करेंगे. स्वामीनाथन सैट इन फादर्स रूम इन अ चेयर. स्वामीनाथन बैठ गए फादर के रूम में चेयर पर. विथ अ स्लेट इन हिज हैंड. उनके हाथ में स्लेट थी. एंड पेंसिल रेडी. फादर हेल्ड द एरिथमेटिक बुक. ओपन करा एंड डेडिकेटेड. राम हैज 10 मैंगोज विथ विच ही वांट्स टू अर्न 15 आनाज. राम के पास 10 मैंगोज थी कमाने के लिए. उसे ये चाहते थे उसे कितने 15 आनाज उसे कमाना चाहते थे. तो कृष्ण वांट्स ओनली 4 मैंगोज. कृष्णा को चाहिए था खाली 4 मैंगोज. हाउ मच मनी विल कृष्ण हैव टू पे. कितनी जो मनी कितने जो पैसे हैं कृष्णा ने पे किए होंगे. स्वामीनाथन गेस्ड सोचते रह गए एट दिस सम एंड एवरी टाइम ही रीड इट अ न्यू थॉट कैम टू हिज माइंड. एक नया विचार उनके दिमाग में आया. हिज माउथ बिगेन. इनका माउथ शुरू हो गया मुंह बोलने के लिए. टू वाटर एट द थॉट ऑफ मैंगोज. क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर. नंबर 1 में है. क्वेश्चन नंबर 1 इज यहाँ लिखा हुआ है. Number 1, what does the first sentence of the text convey? What does the first sentence of the text convey? The first sentence of the text conveys that Swaminathan is all prepared to study with his father. What does the first sentence of the text convey? The first sentence of the text conveys that Swaminathan is all prepared to study with his father. Question number 2. For what amount of money does Ram want to sell his 10 mangoes? Ram wants to sell his 10 mangoes for 15 annas. जो राम थे चाहते थे उनके जो 10 मैंगोज कितने बेचना चाहते थे वो 15 आने में 15 आने में बेचना चाहते थे. तो for what amount of money does Ram want to sell his 10 mangoes? Ram wants to sell his 10 mangoes for 15 annas. Now question number 3. What was the effect of his father's question on Swaminathan? Question 3. What was the effect of his father's question on Swaminathan? When his father asked, Swaminathan kept on gazing at his father, and on the other hand his mouth started watering. When his father asked, Swaminathan kept on gazing at his father, and on the other hand his mouth started watering. Now to paragraph number 2. Swaminathan felt utterly helpless. If only father could tell him whether Ram was trying to sell ripe fruits or unripe ones. Of what use would it be to tell him afterwards?
he felt strongly that the answer to his question contained the key to the whole problem. It would be unfair to expect 15 annas for 10 unripe mangoes. क्या है 2 number? Swaminathan felt utterly helpless. If only father could tell him whether Ram was trying to sell ripe fruits or unripe ones, of what use would it be to tell him afterwards? He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problem. It would be unfair to expect 15 annas for 10 unripe mangoes. Now question number 1. What made Swaminathan feel helpless? Swaminathan felt that his father had not made the point clear whether Ram wanted to sell ripe mangoes or unripe mangoes. This confusion made him feel helpless. So, what would Swaminathan feel helpless? Swaminathan felt that his father had not made the point clear whether Ram wanted to sell ripe mangoes or unripe mangoes. This confusion made him feel helpless. Question 2. What according to Swaminathan was the key to the question asked by his father? According to Swaminathan, the key to the problem was in making the point clear whether the mangoes were ripe or unripe. What according to Swaminathan was the key to the question asked by his father? According to Swaminathan, the key to the problem was in making the point clear whether the mangoes were ripe or unripe. Now question number 3. What according to Swaminathan was unfair? According to expect 15 annas 14 unripe mangoes. 14 unripe mangoes was unfair. According to expect 15 annas 14 unripe mangoes was unfair. Now question paragraph number 3. Get the slate here. I will make you give the answer now. Get the slate यहाँ ले लो, यहाँ लाओ. I will मैं बताता हूँ. You give the answer now. Swaminathan waited for a miracle. चमत्कार को देखना चाहते थे जो होने वाला था to happen. Father studied the sum for a second and asked, what is the price of 10 mangoes? 15 annas, of course. 15 annas, of course. Swaminathan thought. But how could it be the price? Was it the right price? And then he was not sure. क्या सोचते थे कि इसकी इतनी ही सही प्राइस है, वो क्या है, वो उसके लिए वो उनको सही खातरी नहीं हो रही थी. एंड देन ही वॉज नॉट श्योर वेदर
the mangoes were ripe or not. If they were ripe, 15 annas shouldn't be an unfair price. If only he could get more light on this point. 15 annas, of course, Swaminathan thought, but how could it be the price? Was it the right price? And then he was not sure whether the mangoes were ripe or not. If they were ripe, अगर वो पकी हुई थी, 15 annas होगा, shouldn't be an unfair price. If only he could get more light on this point.